Class. Today we will do chapter number 4th maths NCERT, that is basic geometric ideas, right? In this chapter we will study some important terms related to geometry. First, there are points, lines and curve. What are points, what are lines and what are curves? We have to study about these terms. First, the is your point. The point, the line segment, the line and the ray are the fundamental element of the geometry. The definition of point: a point represents a location or position and its dimension, it is dimensionless. It can be denoted by a single letter of English alphabet. Means point is your simple dot is here. You put a dot here, it is your point. You can see we can bring a small dot, right? These all area points are there. A simple, right? You can see in the here the figure also. A point is given. Point is denoted by has a 0 and a simple dot, so we can denote by simple a point is this one. Now second point is your line segment. Second is your line segment. Suppose one point is here, we can take a point here. Let's make a point here, another point is here, right? When you join these 2 points, right, let this point name be A, this point name be B. So this become a line segment. Line segment means a line which has 2 endpoints. A line which has 2 endpoints. For example, a point is here. Let's a point name A, either a point name B, and when you join these 2 points A and B, right, it become a line segment, right? Again, you can see here line segment. It is a one dimension, right? And you can see A point, a point B, and right, these are the right. We join these 2 point A B and it become your line segment. A line segment has 2 endpoints. One endpoint is your A, other endpoint is your B, and we represent line segment in this form, right? You write AB and at the top you will simply draw a line. We also call it a bar also. It is not necessary to AB only. We can write any line name. Let's a line name, right? It is P and Q. Then we will write the name as P Q bar, right? Next is your ray. Ray is also a one dimension, right? Ray means, suppose a point is here. From a point, right, line is going toward only one direction, right? This is known as ray. You can see here a point. यहाँ से आपका from a point, right, line is going on a one direction. It is originating in one direction and it is represented by this form, right? In ray you have to write in the form of A B at the top and you have to make a arrow. Ray is represented in the form of arrow. Now again, next important is line. Earlier it was line segment and now it is line. Again a one dimension, right? Single line means a line which can be extended to infinity. Means we represent like this. It means this side can be moved here, this side can be moved here. It means आपको जितना ज़्यादा कहीं तक भी extend कर सकते हो. We can extend it. A line has no end point. A line has no end point. Suppose ये given है, so this is your line because it does not have any end points. We can extend from this side also. We can extend from this side also. This is your line segment. Now plane. A plane is a 2 dimension. Means 2 dimension means इसकी 2 side आ गई, 1 and 2 side, right? और सबके ऊपर एक साइड थी बस. Only it is 1 dimension. A plane is 2 dimension, right? It is name given. Suppose a square is given, its name is plane. You are having a piece of paper, एक plane हो गया आपका. It is known as plane. Now this is the definition of line segment. Now line segment, the definition. Line segment defined as a shortest distance between 2 points, right? Similar वही ना, आपके 2 points हैं A and B, तो सबसे छोटा डिस्टेंस आपके वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points is known as line segment. A line segment
ज्वाइनिंग पॉइंट एल एम एन आर डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं हम, एल एम और ऊपर एक लाइन आनी चाहिए. द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट. राइट, इट इज टू राइट, it is told that कि suppose a line is here, suppose ये, right, there are 2 points A and B. If you measure the distance with the help of your scale, then it will be the length of this line segment AB, and it is represented by AB. Suppose the distance come 5 centimeter, so you will write AB is equal to 5 centimeter. Next, a plane is said to be very thin. A plane, right, this is your plane. A plane is said to be very thin surface that does not have any thickness or limitless. Right, it is a thin surface like a paper जिसकी कोई thickness नहीं होती. Right, next is your a curve can be defined. Next is your this point is a minimum of 3 points are required to represent a plane. Right, प्लेन बनाने के लिए आपको कम से कम 3 पॉइंट्स चाहिए. यू नीड 3 पॉइंट्स. राइट, सो वो जैसे ट्रायंगल, आपको ये प्लेन हो गया आपका. अ कर्व कैन बी डिफाइन एज अ फिगर. कर्व इज दिस वन, अ स्मूथ फिगर. यू कैन अ सिंपल ड्रॉ अ लाइन. दिस योर कर्व. अ कर्व दैट डू नॉट इंटरसेक्ट देमसेल्फ आर कॉल्ड सिंपल कर्व. मीन्स सपोज ये कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा. राइट, वो जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दीज आर नोन एज सिंपल कर्व. इट मीन्स ये इस तरह घूम के जा रहा है. राइट, ये आपका this is simple curve which do not intersect. Right, we can make in any form, right, any, but it should not intersect. This is known as simple curve. Curve that do not intersect themselves is called simple curve. The end point of curve do not meet, and always remember end points. Suppose one curve is, this is curve, one end point is here, one end point is here, they do not meet. While end point of closed curve to enclosed area. देखो, this is your open curve. When we see the closed curve, then they join together. This is your closed curve. Now next, for a closed curve, you can identify 3 regions: interior of the curve, boundary of the curve, and suppose this is your closed curve. So we can identify this part is known as interior, the line at the top is known as boundary, and this part is known as outer curve. Let's take a, right, this is your curve. A point is here, point A, a point it is outside, and one point is on the line. We can say let's see. So this A point is in the interior point, B point is in your exterior point, and C point is your on the line. You can see on the line. We can also say, suppose a triangle is given. Right, a point is here, let's point A, a point B is outside, and one point is at the on the line C. So we can say A is your interior, B is your exterior, and C is on the line. Right, curve do not cross itself. Right, curve do not cross itself. Next part is your angle. Angle क्या होता है? Angle are made of 2 rays. Right, we have studied rays from a single point. An arrow is here. Right, from a same point another arrow is given, and the gap between these two is known as your angle. Right, we can draw an angle any form. Right, suppose A is your this one, O is your this point, and it is given here. This is your A and this is your B. Right, and this part is known as angle. The angle is made of 2 rays, have one common end. Right, common end. Right, you can see here, you can suppose this is, right, let's here name A, here name B, and here name O. So you can see there are one ray name is OA,
राइट, वी कैन रिप्रेजेंट आई सी. अदर रे नेम इज ओ बी. ये इस तरह हो गया. अब द गैप बिटवीन दिस टू, द इनसाइड गैप, इट इज़ योर एंगल. दिस पार्ट इज योर एंगल and they have common end, that is your O. Next, simple closed curve made of only line segment are known as polygons. Polygons क्या होता है कि simple closed curve, a closed curve, right? For a closed curve we should need 3 line, at least 3 part, right? Made of line segment. Line segment means it should have an end point, straight line, right? ये आपका polygon आ गया, right? A B C, this is a closed, right? A simple closed curve made of line segment, this is known as triangle and it is your polygon, right? This is a definition of polygon, right? This is also a polygon. This is a square shape, it is also known as polygon. This is a square. Even rectangle is also a polygon, right? It is made of line segment. One line segment is this one, another is this one, another is this one, and this line segment. Even right, your hexagon having 6 side, right? First side, second side, third, fourth, fifth, sixth, all are your now, right? Polygons means polygons are made up of line segment, right? And for to make a polygon we require 3 lines, right? 3 line segment we need, right? And right, suppose you want to make a pentagon, right? You draw, right? Pentagon means having 5 side, first side, second side, third side, and fourth and fifth. This is your pentagon. Now next part is your a circle. A circle is a simple closed curve formed by moving at a same distance in a fixed point, right? Circle you have studied. Circle, right? This is your circle. At the center of the circle, it is your center, and center is already denoted by O. From the center, a line we draw, it is known as your radius, right? From the center to the, this part is known as radius. If you read a straight line passing through the center and touches the both end of circle, it is known as your diameter. इसको क्या बोलते हैं? Diameter बोलते हैं. We call it diameter, right? And you can see diameter क्या होता है? ये हमारा रेडियस होता है r, ये भी r हो गया. This join all this line, it become r plus r, it is equal to 2r. That is your 2 into r. और ये मेरा किसका फॉर्मूला है? डायमीटर का, राइट? तो ऑलवेज रिमेंबर द डायमीटर फॉर्मूला इज डबल ऑफ रेडियस, राइट? r means radius. Now next is your 2 ray join at a point to form an angle, right? कि 2 रे आती है, वो दोनों मिला क्या बनती है? एक पॉइंट पे एंगल बनाती है. दे फॉर्म एन एंगल. अ पॉलीगन इज मेड अप ऑफ लाइन 3 लाइन सेगमेंट. अगर कोई पॉलीगन अगर 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, उसका नाम होता है ट्रायंगल. इट इज़ नोन एज ट्रायंगल. अ पॉलीगन इज मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट. इट इज़ नोन एज क्वाड्रिलेटरल. इट इज़ नोन एज क्वाड्रिलेटरल, right? A polygon is made of 3 line segment is known as triangle. A polygon is made of 4 line segment is known as quadrilateral. A triangle, right? This is a triangle, right? Triangle is a polygon. How we name it? Its name is, let's A, B or C. In a triangle, right, there are 3 side. First side is your AB, तो हम नाम कैसे देंगे? A B. Second side is your BC, तो कॉमा डालो B C. थर्ड साइड आपकी क्या है? ए सी है, तो हम कैसे लिखिए? ए सी. तो आपके देयर आर 3 साइड्स इन अ ट्राइंगल, राइट? अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, राइट? राइट, ए बी सी. ए बी वन साइड, बी सी वन साइड, ए सी वन साइड, एंड ए बी एंड सी आर नोन एज वर्टिसेस. दिस पार्ट वर्टिसेस, राइट? अब यू कैन सी हियर, यू कैन सी AB is your line segment, BC is your line segment. इसके बीच पे जो गैप है इसी इट इज नोन एज एंगल. ये क्या हो गया? एंगल. सिमिलरली दिस पार्ट इज योर एंगल, और ये भी एंगल हो गया. तो एक ट्रायंगल के अंदर देयर आर हाउ मेनी एंगल्स? देयर आर 3 एंगल्स. देयर आर 3 एंगल्स. एंड हाउ वी नेम अ एंगल? सपोज आई वांट टू नेम दिस एंगल,
इस एंगल को नाम देना है जो एंगल आपका बी पे बना है, राइट, विच एट द बी। तो हमें इसका नाम देना है, तो इसका नाम कैसे देंगे, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, जो जिसका नाम देना है वो बीच में आना चाहिए। तो स्टार्टिंग ए से करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ए बी और सी। जो एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऑलवेज शुड बी बी, और एंगल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस साइन से, राइट। लिसन अगेन, एंगल का साइन होता है आपका एस साइन। आपको कभी भी कोई एंगल रिप्रेजेंट करना है, वी रिप्रेजेंट बाय दिस फॉर्म, राइट। और टिल्टेड एल, एल नहीं बनाना आपको, एक टिल्ट टाइप का बनाना है, राइट। एंड ट्राइंगल में हाउ मेनी एंगल्स, देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल, राइट। देयर आर 3 वर्टिसेस, ये तीनों ए बी सी वर्टिसेस होते हैं। और एक एंगल कौन सा, एक बी हो गया, एक सी हो गया और एक ए हो गया। अगर आपको किसका बी का नाम लिखना है तो यू विल राइट एंगल ए बी सी। अगर आपको सी का नाम लिखना है, राइट, तो यू राइट ए सी बी, एंगल ए सी बी। अगर आपको ए का नाम लिखना है तो यू राइट बी ए सी, बी ए सी। आपको यहाँ कॉमन नहीं देना है इसमें, बी ए सी। देखो 3 एंगल के नेम हो गए आपके। एंड ऑलवेज राइट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो पहले आ रहा है, लेकिन जिस एंगल की बात हो रही है वो बीच में आना चाहिए। सपोज़ मेरे को बी चाहिए था तो मैंने यहाँ पर बी बीच में आ गया, सी चाहिए था तो सी बीच में आ गया। आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, ए चाहिए तो ए बीच में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटर हैज़ 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, राइट। क्वाड्रिलेटर आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटर है आपका। देखो नाम ए बी सी डी, दिस इज क्वाड्रिलेटर, ए बी सी डी। आप देखो हाउ मेनी वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस मीन्स कोना, एक ए बी सी डी, देयर आर 4 कॉर्नर्स, राइट। एंड हाउ मेनी साइड्स, देयर आर 4 साइड। फर्स्ट साइड नेम इज ए बी, second side name is BC, third side name is CD, and fourth is your AD, right. There are 4 sides. And how many angles are there? There are 4 angles, right. A B C D। तो फर्स्ट एंगल यू कैन सी, एक एंगल ये बन रहा है, सेकेंड एंगल ये बन रहा है आपका, थर्ड ये बन रहा है, एंड फोर्थ ये रहा आपका। देयर आर हाउ मेनी एंगल्स, 4 एंगल्स। एंड सेम नेम कैसे देना आपने, सपोज अगर आपको ए वाला का नाम देना है तो यू राइट बी ए डी। अब ऐसे साइन एंगल का बी ए डी, राइट। आपको सी का नाम देना है तो यू राइट बी सी डी, एंगल बी सी डी। अगर आपको डी का नाम देना है तो एंगल ए डी सी, एंड यू राइट बी नेम तो यू राइट एंगल ए बी सी। देयर आर 4 एंगल्स इन अ triangle, sorry, in a quadrilaterer. Now next, the side that have common vertices are called adjacent side. Means suppose we are saying ये आपका quadrilaterer है, A B C D, एक साइड ये रही, राइट, एंड अदर साइड इस वन, राइट। इन दोनों का वर्टिसेस कॉमन क्या रहा है, ए कॉमन आ रहा है, राइट। इन कॉमन वर्टिसेस मीन्स जो इनका कोना जो बोलते हैं, कॉर्नर कॉमन कौन सा है, ए कोना है। तो ये दोनों साइड आपस में क्या होगी, एडजस्ट होगी, यानी कि बगल की होगी, एक दूसरे के बगल की होगी। सिमिलरली ये और ये एक दूसरे के बगल की होगी, दीज आर एडजस्टेंट हो गया। लेकिन ए बी एंड सी डी दे आर अल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के, मतलब ए बी से एक छोड़ो, बी सी छोड़ो, हम कहाँ पहुँच गए, डी सी पे आ गए, वी आर एट डी सी। सिमिलरली ए बी से लीव ए डी एंड यू रीच डी सी। तो दिस इज then A, B and DC they are alternate, but AB and AD are adjacent. A circle is formed by moving at the same distance. Circle we know, right? आपको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, और सर्कल आपको you can draw it. In a circle, right? If you draw a circle, सर्कल का जो ये आउटर बाउंड्री है ये आपका सर्कमफ्रेंस होता है, दिस इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। एंड इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन, सर्कल के अंदर लाइन ड्रॉ करोगे, इसको बोलते हैं हम कॉर्ड, वी कॉल इट अ कॉर्ड, राइट। एंड यू कैन सी अ कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज हियर, सेकंड पार्ट इज हियर, देयर आर 2 पार्ट्स, राइट। एंड दीज 2 पार्ट्स आर नोन एज सेगमेंट्स, these are known as
segment. And one more thing, in a circle, a line passing through the center of the circle is known as diameter. और diameter ये आपका क्या होता है? It is the longest chord. Diameter is the longest chord. See this line, ये आपकी जो line है, diameter क्या होती है? longest chord होती है आपकी. And diameter, important line, diameter divide the circle into two halves. And you can see yourself, right? You draw a circle and it divides the circle into two equal half. A line segment that join the center of circle is called, right, a line segment that join the center of circle of a point on the circle is called radius. Right, radius I have told you, from here ये आपका radius हो जाएगा. The radius of a circle is half the diameter, right? D is equal to 2r. फॉर्मूला था अभी वी हैव डन, तो r is equal to d upon 2. The part of circle that is enclosed by two radii or arc is called sector. Means suppose O is your center, let's point A. OA is your radius और OB is also radius. Radius क्या होता है? सेंटर से सर्कल को टच होना चाहिए. इसके बीच में जो है ये पार्ट आ रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज योर सेक्टर. दिस योर sector.